on the occasion of Swami Vivekananda Jayanti, which is also celebrated as Young Advocates Day throughout the country. Swami Vivekananda has been an inspiration for the youth of our nation of the view, I quote, "My faith is in the younger generation and the modern generation. Out of them will come my workers. They will work out the whole problem like lions." Today, on this occasion, we are privileged to have amongst us Honorable Justice Harpreet Singh Brar, Judge, Punjab and Haryana High Court, as the chief guest and keynote speaker to inspire and encourage us all here. We also welcome the Vice President of our Bar Association, Mr. Nilesh Bharadwaj, as the guest of honor in today's function. Now I request Advocate Mansi and Advocate Ashish Rana to present a bouquet to Honorable Justice Harpreet Singh Brar. Now I request Advocate Buddhadev to give a brief introduction of our chief guest of the day. नमस्कार। इस गरिमामय सभा के समक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री हरप्रीत सिंह बरार जी का परिचय प्रस्तुत करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। उन्होंने वर्ष 1999 में चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के विधि विभाग से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त और वर्ष 2000 में पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन हुए। बार में अपने विशिष्ट करियर के दौरान हिज लॉर्डशिप ने वर्ष 2009 से 2014 तक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के रूप में सेवाएं दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक वैधानिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं के लिए पैनल काउंसिल के रूप में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। लॉर्डशिप ने बार के प्रशासन और पेशेवर नेतृत्व में भी अहम भूमिका निभाई। उन्हें लगातार 3 कार्यकालों के लिए बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का मेंबर चुना गया और उन्होंने 2 बार इसके ऑनरी सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वर्ष 2019 में उन्हें सर्वसम्मति से बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का चेयरमैन चुना गया। इससे पूर्व हिज लॉर्डशिप लगातार 2 कार्यकालों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। बार में उनकी प्रतिष्ठा और विधि में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2021 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया। उनके पेशेवर दायित्वों को अतिरिक्त हिज लॉर्डशिप ने पंजाब और हरियाणा में कई जिलों में लीगल लिटरेसी सेमिनार आयोजित कर और उनमें व्याख्यान कर विधिक जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया है। उन्होंने अनेक प्रो बोनो मामलों का संचालन किया तथा कई प्रकरणों में ऑनेबल हाई कोर्ट के सहायता हेतु एमिकस करी के रूप में भी कार्य किया। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशन एवं क्रिमिनल लॉ रहा। हिज लॉर्डशिप को अप्रैल 2023 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और इसके पश्चात जनवरी 2025 में उन्हें इस माननीय न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आपके व्यापक अनुभव और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हिज लॉर्डशिप इस पीठ के सशक्त बनाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी उपस्थिति इस माननीय न्यायालय की गरिमा को और बढ़ाएगी तथा हमारे न्याय प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाएगी। धन्यवाद। Now I request our keynote speaker to share his thoughts with us. Shri Baldev Mahajan ji, former Advocate General Haryana, Senior Advocate, Mr. Saini, Secretary of the Adhivakta Parishad, Mr. Sharma, President, Mr. Padam Kant Dwivedi, and Mr. Baba on the dais, and my dear friends
it is endowed my proud privilege to be amongst all of you on this day when we are commemorating and remembering a great son of the soil who was not only a spiritual leader, but he has inculcated great ideas in the youth. His vision has been guiding generations, and he has always mentored the youth with his ideas of nation building, character building. Swami Vivekananda ji placed immense faith in the power and potential of the youth. He emphasized the idea of having a strong character. Only with the character you can create enduring success. He implored the youth, the true success cannot be measured in terms of acquisitions or material achievements. It can only be achieved through dedication, courage, and commitment. A character is the foundation for a responsible nation building and also leading a fulfilling life. Youngsters are the tomorrow's future. And the modern manner in which they are getting educated. In fact, today, I have no hesitation to say and accept that the law is a thoroughly professional degree. In our times, I became a lawyer by accident. So I was a reluctant lawyer. I never even aspired to ever come to Chandigarh. I graduated with English literature as one of my subjects. So I came to this city, beautiful, just to spend some few years here. In spite of the fact I got admission in Department of Laws in Punjab University and Punjab University as well, but I joined the Department of English. Then destiny had other ideas. There was an election in the university after 18 years. So while participating in the election, I forgot I am required to attend minimum lectures. So I was asked to vacate the hostel. So then somebody told me, law is the best choice. You can at least stay here for 3 years. This is how my journey started. And those were the days. So I aspired to become a PCS officer. So I thought I'll appear for twice. If I succeed, fine. Otherwise, I'll go back to what my ancestors have been doing for centuries. Go back to farming. So my father, before his retirement, said, I'm going to marry one of my children. So being the elder, those were the time when the father used to have absolute say. So, as commanded by him, I got married and started going to the district courts. There I got 2 cases of NDPS Act belonging to Rajasthan. 2 persons were caught on the same day, and 5 kg poppy husk each was recovered from them. So both of them paid me 2,200. That was the first brief I got as a lawyer.
So I was very happy to appear before a sessions court because a special judge. So since they were outsiders, so the Perokar came and said, you may engage anyone or you may give yourself to the High Court to secure bail for them. So to lure to come to this city was always too irresistible. I came here, I caught up with my friends, spent 2-3 days there and spent some money out of the fees I got also. So I knew nobody in the High Court, but I knew the clerks with Mr. G.K. Chatrat, a former president and doyen of the bar, because he was also involved in the university. So I asked his clerk, P.P. Singh, his name I remember. The another one is Mr. Pandey, who is now member of the bar. So he introduced me to one stenographer who drafted the petition, bail petition. So the roster was with 2 judges of hearing NDPS bail matters. So I went and sat in both of them. So one judge was not very liberal to grant bail. The other would only ask how much. So my cases were listed before the liberal judge. So I stood up and he said how much. I said 5 kg each. So, all right, bail. So this, because both of them got bail quite early without spending much time, because I wanted to go to Chandigarh soon. So I filed the bail application. Some of my senior advised, wait for some time, you will get bail here. But the God wanted me to come here to take bail. Anyhow, now coming back to the topic, it was for the consumption of the youngsters, because if somebody like me, who was an accident lawyer and by default joined the law department, can achieve something in life, is because of this bar. I owe my existence to this bar, and this bar has given me everything. The first day I went to the courts, so my senior told me one thing, which I always, every day, every moment of my life has guided me. So he said, first, become worthy of your practice. Don't treat it as like a means of livelihood. Once you have created a name and you become worthy of being engaged by in a particular like civil, criminal or particular honor, the money will run after you. For youngsters, I must say the philosophy of the teachings of Swami Vivekananda is all the more important. It is important for other professions also, but this profession, it is very, very important. Because we wear the robes of honor and it is a noble profession. So moral compass, if you have a strong character, the strength comes from within. And it is one such profession which is effort oriented. A person with ordinary skills, with ordinary education, can overcome a person with more IQ and more intellect by putting in more effort. Integrity, hard work, perseverance, and discipline is the hallmark of this profession. There are no shortcuts. I have not seen anybody succeeding in this profession by manipulation or overnight success. Never came to anyone. So initial years are difficult. You have to bear the initial years, but stay focused on your goals. As Swami Vivekananda has said, arise, awake, and stop not till your goal is reached.
So always keep in mind, be fair, listen to the judge, and be gracious in accepting dismissal of your case. It creates moral burden on the judge. If a youngster, 2-3 cases are dismissed, the judge would always feel, next case I must do something for. So this is how we were also mentored when as a youngster by this has always been the tradition between the young members and the bench. Bench has always special consideration for the youngsters. So it is better to lose a case than lose a judge. So listen to the judge, first answer the query. I remember in one of the function in the Bar Council, our former Chief Justice, he informed us through his speech that for first 3 years, he did not get a single brief. And the first case he won was a respondent brief in which he did not even utter a word. So this is, you have to tide over the initial years, but never lose focus. There is no greater privilege than fight for justice for someone, for providing justice to the last man standing, to the destitute. There is no harm in taking up pro bono cases. Because without compassion, there is no justice. So the legal fraternity, this country has a special heritage, and they were on the vanguard of the freedom struggle. Our father of nation was from legal fraternity, first prime minister, first president. They were all from legal fraternity. So I will end by quoting our father of nation. The law is not an intellectual ledger domain to convert white into black or black into white. It is a ceaseless endeavor to enthrone justice. And the responsibility lies on the shoulders of the young members of the bar to enthrone justice. Jai Hind. Grateful your lordship for your kind words of wisdom. Now I request Advocate Gurmeet Kaur Gill and Advocate Anita Balyan to present a memento to our chief guest. Now I request Advocate Padamkant Dwivedi to the dais. Hon'ble Justice H.S. Brar जी, श्री बल्लेराज महाजन जी, आर डी बाबा जी, सुनील जी, प्रवेश जी और सभी मेंबर्स इस हॉल में जो आए हैं अपना समय लेके। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद आज जो ये उत्सव मना रहा है स्वामी विवेकानंद जयंती यंग एडवोकेट्स डे के रूप में, ये नहीं कि सिर्फ चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में हर कोर्ट यूनिट में ये फंक्शन जो है 12 से लेके और 30 जनवरी के बीच में मनाया जा रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ आज भी 4-5 जगह पे ये फंक्शन इसी टाइम मनाया जा रहा है, जहाँ पे
उन कोर्ट्स के ऑनरेबल जजेस या बहुत ही जो स्पीकर्स हैं वो लोग उस विषय पे अपना ज्ञान दे रहे हैं। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस से जब हम मिलने गए उनको इनवाइट करने के लिए, तो उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया, कहता है कि आपने बुलाया है तो मैं बाहर के फंक्शन में या अधिवक्ता परिषद फंक्शन में जरूर आऊँगा। जब वो बाहर के प्रेसिडेंट भी थे यहाँ पे, तब भी उनका हमेशा अधिवक्ता परिषद को सहयोग मिला है। वो हमारे कार्यक्रम में भी पहले आए हुए हैं, तो इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जो जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच है, जैसा कि वो उनकी जजमेंट्स में झलकती है। अगर आप लाइव लॉ बार एंड बेंच को फॉलो करते हैं तो आप पढ़ते होंगे जजमेंट्स। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के ऊपर उनकी जो जजमेंट्स हैं, और जो आप हेडलाइंस पढ़ेंगे, 4-5 हेडलाइंस पढ़ूंगा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, नो ग्राउंड टू डिनाई मेडिकल रिइंबर्समेंट टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर्स 5 लाख कंपनसेशन टू रिट्रेंच्ड वर्कर डिनाइड ऑब्जॉर्प्शन फॉर 30 years डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। पंजाब एंड हाई कोर्ट directs Haryana's principal secretary to personally examine 80-year-old widow's 5 decades old claim for pensionary benefits. No recovery from pension without prior notice or consent. No dispute proceedings can be initiated after dismissal of employee from service. Now, ये नहीं कि सिर्फ जैसा कि जो जजमेंट्स होती है बहुत ही बैलेंस्ड होती है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा, टेस्टिंग ओनली बुकिश नॉलेज इन गवर्नमेंट एग्जाम्स इग्नोर स्किल नीडेड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। Disregard to human dignity. High Court slams Haryana Authority for delay in ex gratia appointment orders 7.5 lakhs compensation and interest. Mere registration of FIR does not constitute misconduct increments. So कहने का भाव यह है कि पहले लॉर्डशिप्स जब क्रिमिनल रोस्टर में थे तो वहाँ भी उनकी जजमेंट्स सभी लोगों ने पढ़ी होंगी। हर लॉ पे उनके पास लीडिंग जजमेंट्स उनकी आई। इस हाईकोर्ट से क्रिमिनल अपील का जो एक्विटल के अगेंस्ट अपील थी वो हाईकोर्ट में सीधा आती थी, उसका उन्होंने लॉ सेट किया कि एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वो पहले सेशन कोर्ट के पास जाए। तो ये जो अवेयरनेस है ये हम सबको उनकी जजमेंट्स के थ्रू मिलती रही है। और आज जो उन्होंने हमें गाइड किया है इस विवेकानंद जयंती पे, जो हमारे यंगस्टर्स आज बैठे हैं, कुछ इंटर्न्स भी बैठे हैं हमारे बीच में, तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छा ये एक सबक है। और कैसे आप लोग इस नोबल प्रोफेशन में कुछ स्ट्रगल करके, कुछ साल स्ट्रगल करके कैसे लीड कर सकते हैं। जैसा हमने तो पंजाब यूनिवर्सिटी में देखा, पहले वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लीड किया, उनके कॉज के लिए वहाँ पे लड़ते रहे, वहाँ पे भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे, फिर बार के प्रेसिडेंट रहे 2 बार, बार काउंसिल में आप चेयरमैन रहे। तो हमेशा से कॉज ऑफ जस्टिस के लिए आपने लड़ाई लड़ी है और जीते हैं और सबको एक अच्छा मार्गदर्शन दिया है। तो आज एज ए ऑनरेबल जज ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट आप जो अपनी जजमेंट्स के थ्रू हमें गाइड कर रहे हैं, तो वो जो आपका कॉज, वो आपकी जो लड़ाई है वो जारी है। और ये हम सबके लिए बहुत ही मैं कहूँगा कि प्रेरणादायक है। और मैं जज साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स मेरे ख्याल से प्रवेश जी देंगे। I request Advocate Parvesh Singh Ji for vote of thanks. धन्यवाद। वैसे तो बहुत ही सुंदर शब्दों में पद्मकांत जी ने वोट ऑफ थैंक्स किया है, फिर भी औपचारिकता है। मैं आप सभी की तरफ से, अधिवक्ता परिषद की तरफ से, चंडीगढ़ की तरफ से माननीय न्यायमूर्ति श्री हरप्रीत सिंह बराड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुमूल्य समय निकाला और आज के इस अवसर को सफल बनाने में हमारा पूर्ण योगदान दिया। साथियों, अपने इस उद्बोधन में सबने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्वामी विवेकानंद जी का कोट किया। उन्होंने कहा था, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करो। सर, आपके विचार, आपके आज का ये उद्बोधन से मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे बीच में यंग एडवोकेट्स हैं, हम सभी जो हैं एक प्रेरणा लेके जाएंगे कि हम भी उठेंगे, जागेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। सर, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमें मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जनगण मन के। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।